यस। तो ऑथर को बहुत क्लैरिटी है, मतलब काफ़ी क्लियर थिंकिंग लग रही है इसमें। और जो वो कहना चाह रहे हैं वो हर लाइन में, हर पैराग्राफ में समझ में आ रहा है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, इसमें जी आप पढ़ सकते हैं, योर न्यू स्कोर बोल्ड। Your new scoreboard. Your new scoreboard is the five types of wealth: time wealth, social wealth, mental wealth, physical wealth, and financial wealth. Where the old default scoreboard was entirely based on financial wealth, the new scoreboard is grounded in the diverse pillars that define a true wealthy existence. With the five types of wealth, you are no longer waiting to arrive because happiness and fulfillment, previously a hoped for destination, are embedded in the journey itself. You don't have to wait to arrive, you can feel like you have arrived every single day. This new scoreboard dramatically outperforms the old across three major domains. First is measurement, second, decision, and third is design. So, measurement incorporates all the pillars of a happy, fulfilling existence into your point in time measurement, which sets the stage for appropriate actions. Measure the right thing and you will take the right actions. Measure for the war and you'll never lose sight of it amid the chaos of the battles. Decision provides a dynamic lens through which to evaluate minor and major life decisions. Rather than being narrowly focused on financial wealth, you can evaluate a decision based on its impact on all five types of wealth. A daunting decision on the old scoreboard, one that will have a negative impact on financial wealth, may prove exciting on the new scoreboard because it will have a positive impact on several other types of wealth. Interesting. Design provides a model for proactive life design that considers your changing priorities across the years and enables you to focus on specific individual battles without sacrificing your victory in the long term war. It creates clarity as you evaluate the trade offs you are willing and unwilling to make to prioritize specific areas. सो तीन चीजों से हमें वो स्कोरबोर्ड को करना है: मेजरमेंट, डिजाइन एंड द सेकेंड वन वाज डिसीजन. एम डी डी, एम डबल डी, एम डी स्क्वायर। Each of the five types of wealth are individually important, but it's the relationship across them, the interplay and prioritization that are critical in building a comprehensively fulfilling experience. एग्जिस्टेंस। Sorry, existence. हाँ, वैसे सेम बात है। यस। Time wealth is the freedom to choose how to spend your time, whom to spend it with, where to spend it, and when to trade it for something else. It is characterized by an appreciation and deep understanding of the precious nature of time as an asset, its value and importance. It is the ability to direct deep attention and focus to the highest leverage activities. It is the control over your time, the ability to establish your own priorities, to set the term on which you say yes or no to opportunities. If you have a life devoid of time wealth, you are trapped in a perpetual loop of busyness, running faster and faster but never making progress, with little control over how time is spent and whom it is spent with. अब जैसे थोड़ा इसमें हम सोचें कि अभी जैसे इस सेशन में हम अभी चार लोग हैं, राइट? Hmm. और संडे का दिन है आज, टाइम भी बहुत कन्वीनियंट है। Mm-hmm. कैन इमेजिन के लोग क्या कर रहे होंगे। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो ये बुक पढ़ना चाहते हैं, राइट? और जो बुक्स पढ़ना चाहते हैं और पर्टिकुलरली ये बुक पढ़ना चाहते हैं, और 1 PM पे लोग ज्वाइन भी करते हैं नॉर्मली समटाइम्स। Right. तो क्या क्या ऐसी बातें होंगी जिस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए होंगे? तो Hmm. अगर हम टाइम वेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो समझ में आ रही है बात। Right. तो ये बहुत डीपली सोचने की बात है कि, और जैसे कई बार एक कहावत भी कही जाती है कि सम पीपल आर सो पुअर, द ओनली थिंग दे हैव इज लॉट ऑफ मनी। Hmm. Hmm. लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे क्योंकि वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे या ये प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे कि मुझे इस समय 1 बजे क्या करना है। कुछ चीज़ ऐसी है साइड की, कोई ऐसी पेरिफेरल एक्टिविटीज़ हैं, कुछ ऐसी घर की जिम्मेदारियां हैं साइड की,
कि बस वी आर इन द लूप ऑफ बिजीनेस काइंड ऑफ जो कह रहे हैं। तो वेल रिटन पैराग्राफ, सो Mm, इंसाइट। yes. ऐसी चीज़ों का तो हमें बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके बार बार पढ़ना भी चाहिए और शेयर भी कर सकते हैं। Mm. Social wealth is the connection to others in your personal and professional worlds, the depth and breadth of your connection to those around you. It is a network you can rely on for love and friendship, but also for help in times of need. It provides a texture that allows you to appreciate the other types of wealth. What good is the freedom to control your time if you don't have anyone special to spend it with? What joy? Okay. Hmm. What joys can physical vitality bring if you can't enjoy physical pursuits with people you love? What satisfaction can money provide if there is no one to dote on? Social wealth, कुछ ऐड करना है आपको? नहीं नहीं, कंटिन्यू कर सकते Okay. Social wealth is defined by a few deep, meaningful, healthy relationships and a fulfilling breadth of surface ties throughout your community or culture. If you have a life devoid of social wealth, you focus on acquired social status and lack the consequential weighty relationships that provide lasting satisfaction and joy. हैं। Such a wonderful book. Yeah. Mental wealth is a connection to a higher order purpose and meaning that provides motivation and guides your short and long term decision making. It is grounded in a pursuit of growth that embraces the dynamic potential of your intelligence, ability, and character, and an engagement in lifelong learning and development. It is the health of the relationship with the mind, the ability to create space to wrestle with the big, unanswerable questions of life, and the maintenance of rituals that support stillness, balance, clarity, and regeneration. If you have a life devoid of mental wealth, you live a life of stasis, self limiting beliefs, stagnation, low purpose activities, and perpetual stress. Physical wellness is your health, fitness, and vitality. Given its grounding is the natural world, Given its grounding in the natural world, it is the most entropic type of wealth, meaning it is more susceptible to natural decay, uncontrollable factors, and blind luck, positive or negative, than other types. Physical wealth is entropy. एंट्रोपी कुछ एनर्जी से रिलेटेड था ना, या ऑर्डरलीनेस? क्या था एंट्रोपी? पढ़ा हुआ है कभी? एंट्रोपी आई थिंक मतलब जिसका डिके होगा ही, कुछ इस तरह से कह सकते हैं हम। डेटेरियोरेशन जिसका होगा विद द टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, इस तरह से। ओके. Dictionary meaning says lack of order or predictability, gradual decline into disorder. ग्रेजुअल डिके, ये डिसऑर्डर। Hmm. If you have a life devoid of physical wealth, you lack the discipline to maintain these habits, and you are at the mercy of the natural physical deterioration that robs you of enjoyment, particularly in the latter half of life. Financial wealth is typically defined as financial assets minus financial liabilities, a figure often referred to as net worth. On your new scoreboard, there is an added nuance. Your liabilities include your expectations of what you need, your definition of enough. If your expectations rise faster than your assets, you will never have a life of true financial wealth because you'll always need more. Financial wealth is built upon growing income, managing expenses, and investing the difference in long term assets that compound meaningfully over time. If you have a life devoid of financial wealth, you exist on a treadmill of matching inflows and outflows, a never ending chase for more. With these 5 types of wealth, you have a new scoreboard, one that will allow you to win the battle and the war. तो रीडिंग तो यहीं तक रखेंगे आज हम इसकी। Hmm. और ऐसा लग रहा है कि आई थिंक ये उस तरह की बुक में से है जिनको हम
धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ें, अपने अंदर जाने दें, और हमारी एक की कंपेनियन बनी रही है बुक लॉन्ग टाइम के लिए, ताकि हम उस थॉट प्रोसेस में रहें। क्योंकि इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो हमें पता ही है सारी, लेकिन ये एक्सपीरियंस के लिए, कॉन्टेम्पलेशन के लिए, उस तरह के चीज़ों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आप सभी एग्री करते हैं इस बात से? ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसी बुक है जो आराम आराम से, जैसे उसका रस लेते हुए धीरे धीरे पढ़ी जाए, और कॉन्टेम्पलेशन उस डायरेक्शन में किया जाए, और पूरे मंथ हमारा वो थॉट प्रोसेस रहे। तो इसके लिए आप सभी तैयार हैं मेंटली? जी। Yes. एंड व्हाट जी। अबाउट द डेज व्हेन यू आर नॉट अवेलेबल टू रीड एट 1 PM? हाउ विल यू? स्नेहा जी से पूछिए। अच्छा, आप तो हो मतलब। मैं तो हूँ अवेलेबल। अब तो स्नेहा जी बताइए, कैसे मैनेज होगा? 1 or 2 days ऑफिस में रहूंगी, तो वो उस टाइम थोड़ा सा ये हो सकता है, बट आप अपलोड करते हैं ना हमारा मेंबर ओनली ग्रुप में, तो वहां से आई विल। भी मैं ही सुनना चाह रहा था, आप अवेयर हो क्या नहीं? हाँ। ठीक है, वो भी ऑप्शन है, राइट। और सेल्फ रीडिंग तो ऑप्शन है ही, फिर खुद से भी हम पढ़ सकते हैं, ध्यान देके। ठीक है जी, तो आप सभी लोग एक काम ये कर सकते हो कि जो हमारे बुक रीडिंग का ग्रुप है, एक तो ग्रुप कोचिंग का ग्रुप है और एक हमारा बुक रीडिंग वाला है, आप दोनों में से किसी में भी, या कोचिंग वाले ग्रुप में, आप एक ऑडियो मैसेज शेयर कर सकते हो। क्योंकि अभी हमने शुरू ही किया है बुक, ये बाकी सभी अभी इस अवेयरनेस में नहीं है जिसमें आप सभी हो, तीनों चारों। तो आप ये 1-2 मिनट का एक ऑडियो शेयर कर दीजिए कि हमने बुक पढ़ना शुरू किया है और हमें रियलाइज़ हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और बाकी सब भी टाइम निकाल के कैसे भी करके इसके साथी बने। बाकी फिर सबकी मर्जी है, हम तो अपने काम कर ही दें, हमारा काम है संदेश देना। ठीक है। एक कोर्स में मैंने कहीं सुना था बहुत पहले, देर आर 3 स्टेजेस: संदेश, उपदेश, आदेश। कुछ लोग हैं जिनको आप संदेश दे सकते हो सिर्फ, कुछ लोग हैं जिनको आप उपदेश भी दे सकते हो, मतलब कोच कर सकते हो, कुछ लोग हैं जिनको आप आदेश भी कर सकते हो। तो अभी हम संदेश दे सकते हैं बस, बाकी उनकी मर्जी। ठीक है जी, इतना ही करते हैं फिर। मुझे एक चीज ये आ रहा था कि मेरा जैसे मेरा बहुत मन होता है 1 बजे जुड़ने का, पर किसी कारण से मैं उसमें फोकस नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं भी ऐसे ऑफिस में नहीं रहता, ऐसा ही कुछ ऐसा मेरा वर्क होता, तो मैं शायद अच्छे से फोकस करके जुड़ता अच्छे से। बिल्कुल, और मैं तो ये कहूँगा कि हर एक पर्सन को, मतलब ये तो ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है ये बुक। इस तरह की बुक्स और भी हैं, लेकिन ये बुक भी बहुत अच्छी है। और टाइम वाली वेल्थ पे सबको फोकस करना चाहिए, एंड आई एम रियली ग्लैड आई कैन से आई हैव इमेंस टाइम वेल्थ, इमेंस। अभी तो है, होपफुली आगे भी रहेगी कंटिन्यू। मुझे लगभग 95% मुझे पता है कि मुझे अपने टाइम का क्या करना है। नो बडी एल्स डिसाइड्स इट, आई ओनली डिसाइड। तो ये टाइम वाली वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल वेल्थ की बात भी हमने की, फिजिकल वेल्थ, उन सब पे भी काम चलते रहता है लगातार। तो आई एम इन लव विद दिस बुक, एंड होपफुली यू आर ऑल्सो। ठीक है जी, मिलते हैं फिर, हम कल मिलते हैं।